Good morning, class 2. So, how are you all? So, today we are going to start with a new chapter of our English book, and the name of the chapter is The Ant and the Grasshopper. So, the story is about an ant and the grasshopper. So, you all know ant क्या होती है और grasshopper क्या होता है, right? Everyone knows. Ant, चींटी and grasshopper जो है वो it is of green color. Alright, da. So let's start with the story now. It was a nice summer afternoon. The sun was smiling in the sky. So the narrator is explaining that it was a nice summer afternoon. Summers की afternoon थी, मतलब summers का time था, गर्मियाँ थी और दोपहर का time था. The sun was smiling in the sky, and the sun was smiling in the sky. That means it was a sunny day. It was happy watching the little birds moving in and out of their nest. एंड इट वॉज वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा लग रहा था देख के. बर्ड्स जो है वो अपने नेस्ट में जा रही थी, नेस्ट से बाहर आ रही थी. द बटरफ्लाइज वर बिजी इन कलेक्टिंग नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर्स. एंड वॉट वर बटरफ्लाइज वर डूइंग? दे वर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. नेक्टर इज अ जूस which butterflies and various bees they collect from the flowers, all right, and they make honey out of it. The ants were walking in a single line, and the ants were walking in a single line. Have you ever seen how ants walk? They walk in a single line. एक के पीछे एक चलती है. They were busy collecting food. So everyone, the birds, the butterflies, the ants, everyone was busy in collecting food because it was summers time. तो सारे इंसेक्ट्स जो है वो समर्स में बाहर निकलते हैं और समर्स में बाहर निकल के वो अपना खाना कलेक्ट करते हैं फॉर विंटर्स ऑल्सो, बिकॉज इन विंटर्स में स्नो पड़ जाती है, बहुत ठंडा होता है, तो तब उस टाइम पे वो बाहर नहीं निकलते हैं अपने घरों से, वो अपने घरों के अंदर रहते हैं. सो ड्यूरिंग समर्स दे कलेक्ट फूड फॉर देमसेल्व्स. सडनली द सन लुक्ड एट द ग्रास हॉपर एंड द सन लुक्ड एट द ग्रास हॉपर. सन ने ग्रास हॉपर को देखा, मतलब सन जो था वो ट्रेवल करता करता ग्रास हॉपर के ऊपर आ गया. इट वॉज लेजीली स्लीपिंग अंडर अ ट्री एंड द ग्रास हॉपर वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. द सन वेंट नियर द ट्री टू गेट अ क्लोजर लुक एट द ग्रास हॉपर. दैट मीन्स सन जो था वो पूरा ग्रास हॉपर पे आ गया था. द एंट वॉज कैरिंग अ हैवी पीस ऑफ फूड एंड वॉज क्रॉलिंग टू हर होम. एंड वॉट हैपेंड? द एंट वॉज कैरिंग अ हैवी पीस ऑफ फूड. हैव यू एवर सीन एंट्स when they carry food? वो कितनी छोटी छोटी सी होती है ना, वो इतने बड़े बड़े खाना लेके चलती हैं अपने ऊपर. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग है. सो द एंट वॉज कैरिंग हैवी पीस ऑफ फूड ऑन हर सेल्फ एंड इट वॉज क्रॉलिंग बैक टू हर होम. अपने घर वापस जा रही थी. द ग्रास हॉपर वॉज वेरी अम्यूज. ना द ग्रास हॉपर फाइंड इट्स वेरी फनी. अम्यूज मतलब बहुत ही फनी लगना. सो द ग्रास हॉपर फाउंड इट वेरी फनी. वॉट फनी डिड ही फाउंड? उसको जो है वो ग्रास हॉपर को जो एंट अपने घर खाना लेके जा रही थी, बहुत हंसी आ रही थी उसको वो देख के. यू सिली एंट सेड द ग्रास हॉपर एंड ग्रास हॉपर सेड यू सिली एंट. तुम कितनी बेवकूफ़ एंट हो. सिली मतलब बेवकूफ़. व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल डे? इतना अच्छा दिन हो रहा है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए. तुम इतने अच्छे दिन पे काम कर रही हो. कम रेस्ट अंडर द शेडी ट्री फॉर अ वाइल. द एंट लुक्ड एट द ग्रास हॉपर. डोंट यू नो दैट इट वुड सून बी विंटर्स एंड देयर वुड बी स्नो एवरीवेयर? So the grasshopper said to ant that it is such a beautiful day, you must come and rest with me on this beautiful day instead of working. Alright, there is no need to work. Why are you working so hard? You just come and rest with me. So the ant said that don't you know, very soon it would be winter's time and there would be snow everywhere. कुछ दिनों में winters आ जाएगी और हर जगह snow हो जाएगी, और जब snow आ जाएगी तो सब कुछ snow में दब जाएगा, खाना खाने को नहीं मिलेगा. So I must store food for विंटर्स. तो मुझे विंटर्स के लिए फूड को स्टोर करना पड़ेगा. ओ माई गॉड, लाफ द ग्रास हॉपर, द विंटर्स इज स्टिल फार अवे. सो वॉट हैपेंड? द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट वॉट द एंट वॉज सेइंग. ही सेड द विंटर्स आर फार अवे. विंटर्स अभी बहुत दूर है, अभी हमें आराम से आराम करना चाहिए, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द एंट नॉडेड इट हेड्स एट द ग्रास हॉपर्स फुलिशनेस एंड वॉकड अवे. So the ant explained the grasshopper why it was important to collect food, because the winters will come and there will be snow everywhere and the food will not be available afterwards. So but the grasshopper did not listen to her and he kept on laughing. So the ant nodded his head कि oh no, अब कुछ नहीं हो सकता, इसको नहीं समझा सकते, and she walked away. A few months later it was winter times and what happened? कुछ महीने बाद winters आ गई. Everything around was covered with snow. And everything around was covered with snow like this.
The grasshopper peeped out of his home to see if there was any food around. So the grasshopper अपने घर से बाहर निकल के देखा. उसने peeped out मतलब अपने घर के अंदर बैठ के खिड़की से झांक के देखना. तो उसने अपनी खिड़की से झांक के देखा कि बाहर कुछ खाना है कि नहीं है. Every time he shivered and got back in feeling sad. So every time he tried moving out, and every time, because it was so cold outside, he could not stand outside. वो shivering करके मतलब कांप के घर में वापस आ गया. And he felt very sad because he had no food to eat. There were no green leaves, no grass to eat because it was too cold outside. Because of the snow, because of the cold, all trees were covered under the snow and all grass was covered under the snow. So there was no food to eat for the grasshopper, and he was very hungry and he was feeling very sad. The same ant crossed his house and felt very sad. वो ant जो थी वो उसके घर के पास से निकली और उसको बहुत बुरा लगा grasshopper को भूखा देख के. I told you to collect some food for the winters, but you only wanted to rest and relax. So the little ant reminded him. She said, I told you, right? I told you to search for food, to collect the food for winters, but you were all busy in resting and relaxing. तुम रेस्ट कर रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे और तुमने काम नहीं करा. Now you can relax all winters without any food, and now you can relax all winters without any food. अब तुम winters में बिना food के relax करो. The ant told the grasshopper and walked away. ये बोल के ant जो थी वहाँ से चली गई. The grasshopper learned the lesson of his life, that instead of wasting time in laziness, one must think and plan for the future. So the grasshopper realized and he learned his lesson. उसको अपना सबक मिल गया कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है लेजीनेस में, मतलब ऐसे ही अपना समय बर्बाद करने में और सुस्ताने से अच्छा है, लेजीनेस रखने से अच्छा है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करें और अपना काम पहले से करके रखें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए. सो दैट वेज द ग्रासहॉपर लर्नड हिज लेसन फॉर लाइफ. हमेशा के लिए उसको ये बात याद रह गई दैट ही शुड नॉट बी लेजी and he must think about his future and he must store food for the future and he must work hard, because the one who always are lazy and who don't do their work on time, they later on have to suffer because of the laziness they were showing initially. So that was the story of a grasshopper and ant. आपको इसी तरह से ग्रास हॉपर से लेसन लर्न करना चाहिए और अपना काम हमेशा टाइम पे करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े. एंड वी शुड नेवर बी लेजी. हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी एक्टिव. नाउ द स्टोरी इज अबाउट एन एंट एंड अ ग्रास हॉपर. द ग्रास हॉपर वॉज डैश एंड द ग्रास हॉपर वॉज लेजी एंड द एंट वॉज एक्टिव. द ग्रास हॉपर वॉज sad and hungry during the winters because he had no food. The ant felt sorry for the grasshopper. Now true and false. The ant and the grasshopper was playing together. No. The ant was working and the grasshopper was resting. The sun was smiling in the sky. True. Everything is covered with snow during summers. False. Everything is covered with snow during winters. The ant gave the grasshopper food to eat. No, the ant did not give grasshopper the food to eat. The ant told the grasshopper, now you can relax all winters without food. It is false. By mistake I have written here true. What was grasshopper doing? The grasshopper was lazily sleeping under the tree. आराम से सो रहा था ना वो ट्री के नीचे. Why was the ant carrying food? The ant was carrying food to store it for the future. Future के लिए store food कर रही थी वो. What did the grasshopper want the ant to do? Grasshopper ने क्या बोला था ant को? Grasshopper wanted the ant to rest under the shady tree like him. What lesson did the grasshopper learn? Grasshopper ने क्या lesson learn करा? The grasshopper learned that instead of wasting time in laziness, one must think and plan for future. Now circle the odd one out in each set. Now odd one out क्या होता है? Odd one out means something which is different than other things. Now first look at the first line. Ant, butterfly, ox, bee. Now ant is small, butterfly is also small,
and B is also small, but ox is a very big animal, so ox is odd one out. Pen, paper, spoon, eraser. Pen is used for writing, paper is used for writing, eraser is used to erase things. So all these are common and spoon is odd one out here. स्पून से हम खाना खाते हैं, ये अलग है इन सबसे. Lion, rabbit, tiger, fox. Now which one is out? Lion, rabbit, tiger and fox. Lion, tiger, fox, they belongs to a same family, and rabbit belongs to a different family, and it is smaller than all these, so rabbit is odd one out here. ग्रुप द वर्ड्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द सीजन दे बिलोंग टू. अब यहाँ पे ग्रुप वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन सीजन में डालना है. सीजन कौन सा है? समर, रेनी, विंटर. स्वेटर्स कब पहनते हैं हम? विंटर्स में. आइसक्रीम कब खाते हैं? वी ईट आइसक्रीम इन समर्स. वाटरमेलन कम्स इन समर्स. रेनकोट इज यूज्ड इन विंटर, रेनी सीजन. ग्लव्स आर यूज्ड इन विंटर्स. गमबूट्स आर यूज्ड इन रेनी सीजन. Use the alphabets given in the circle to make new words as you can. You can add vowels on your own. यहाँ पे words दिए, alphabets दिए हुए, इनसे आपको words बनाने हैं. You can make your own words and you can add vowels in the one. Vowels that is A, E, I, O, U. बिना इनके तो words नहीं बनेंगे. So I have made words like pen, run, ten, bin, bun, win, pin, sip. You can make your own words from these alphabets and you can add vowels on your own. Now choose the correct naming word to fill in the blank. Now we all have done naming word in the previous class. Today we are going to use these naming words in the sentences. Monkey, books, horse, milk, water. I like to ride a horse. Ride किस में से करते हैं इन सब में? Horse को ride कर सकते हैं ना, तो I like to ride a horse. There is a monkey on the tree. Tree पे कौन बैठता है इन सब में से? Only monkey tree sits on the tree. Is dash is in white color. Milk is in white color. I have put dash in the cupboard. I have put books in the cupboard. Please give me a glass of water. So that's how you need to fill the most appropriate words in these blanks. Now look at these pictures. Make 2 sentences each as shown. One is done for you. Grasshopper. This is a grasshopper. We can see a grasshopper in a garden. Now this is a teacher. This is a teacher. A teacher teaches us in a school. This is a doctor. Look, she's a doctor. She has stethoscope. This is a doctor. A doctor gives us medicine. This is a policeman. A policeman solves crime. Crime solve करता है ना policeman. This is an aeroplane. This is an aeroplane. An aeroplane is the fastest means of transport. Aeroplane पे सबसे तेज चलने वाला transport है. Now this is a joker. We can see joker in circus. Now name any 2 places. Now we all have done naming words. Name any 2 places. 2 places के नाम बताओ. I have written Delhi and Shimla. You can write places of your own choice. Girls के name लिखने हैं 2. Sonam and Riya I have written. Boys Rahul and Aman. Fruits mango and plums. Vegetables I have written eggplants and pumpkin. You can write of your own choice. Flowers rose and lotus. You can write any name, any flowers name you want to write. So these are common nouns and these are proper nouns. आपको common noun दिया हुआ है, आपको उसमें से proper noun write down करना है. Alright. Now write 5 sentences on your favorite season and make a picture collage on the same. This is your homework. You need to write 5 sentences on your favorite season. Suppose your favorite season is rainy season. So you need to write 5 sentences on rainy season. Like rainy season comes in which months? What do you do in rainy season? Which food you like to eat in rainy season? What all we wear in rainy season? That we use umbrella, we use raincoats and gumboots in rainy season. And so you can write about your favorite season and you need to make a picture and collage on the same. Now order the pictures according to the story. This looks like a familiar story. There is a crow and there is a pot filled with water. So इसको आपको correct order में लिखना है. तो सबसे पहले क्या हुआ था? The crow was very thirsty. Then what happened? The crow saw a pot filled of
water, but the water was too low. So this is the second part. Then he collected stone in his beak, ताकि उसका pot का water जो है वो ऊपर आ जाए. And then he put this stone in the water. Water comes up, and then he drank the water and fly away. So the story of a thirsty crow, you need to put it in order. Now complete your work of this chapter in your book and in your notebook.